Assalamu alaikum and welcome to lecture number 7 for the course Corporate Social Responsibility. Now we're discussing chapter number 2, and hopefully by the end of this lecture we will be finished with chapter number 2 as well, which is about evolution of a corporation and evolution of corporate social responsibility. What have you learned so far in this chapter, and what are the learning objectives of this chapter? We would want you to understand the concept of corporation. We would want you to trace, or we would want you to understand the brief history of corporations as well, as to how have they emerged and how have they become the entities as we see them today. We want you to understand, or you should be able to understand by now, that how does modern corporation, or how has the modern corporation come into existence. And we would also want you to provide a brief outline for corporate governance. And we would also analyze the importance of corporate social responsibility in corporate governance. The first 4 points we've done in the last 3 lectures, and today we're going to start with the importance of corporate social responsibility in corporate governance, in the concept of corporate governance. Now, as I told you in my last lecture as well, that the stakeholder theory is a very integral, or it has a very important role to play in corporate governance, and it has a very important role to play in the management of a corporation. Having said that, I do not mean that we're not looking after the interests of the shareholders. We just can't do that, because shareholders are basically the suppliers of your finance. They're the ones who are buying the shares, they're the ones who are giving the money for the corporation. So what I'm trying to say here is that stakeholders and shareholders, they would go hand in hand, and that stakeholders theory is integral to corporate governance in addition to the shareholders value. Having said that, it's generally accepted, or it's generally agreed upon, that the government cannot do all the work for the society, or the government cannot manage all the needs of the society by itself. So that means that there needs to be another entity so that who helps the government out. Now, who is that other entity going to be? That other entity is going to be companies who have to involve themselves for the welfare of the stakeholders. Now, corporations would have generally 4 different kind of responsibilities towards them. They would have their economic responsibility, whereby they would be utilizing the raw material and they would be converting it into products and services which are going to be utilized by the consumers, who are going to pay a price for them, and the company or the corporation is going to earn a profit out of this entire exchange process. Then the other activity that or the other responsibility that the corporations have is the Regal Responsibility, whereby they are bound to abide by the rules and the regulations, and they are bound to abide by the codes and the guidelines which have been set for them by different organizations or the governments or different associations. Then there's an ethical responsibility of the corporation as well, whereby they're supposed to honor the trust that the people and the society have entrusted upon them, and they're also supposed to be sensitive towards the culture of the countries in which they are selling or distributing their goods and their products and their services. And then they have certain discretionary responsibilities as well, which is basically to undertake voluntary activities and expenses, keeping the greater good of society in mind. These voluntary services can be in the form of maybe providing education to people, and this could be in the form of maybe providing or doing activities which would alleviate poverty. They could be in the form of maybe giving or ensuring that the environment gets cleaned up and work against the environmental degradation. So these are all various different voluntary activities that the corporation can take and spend money on these activities voluntarily, so that they can work or they can benefit the society in which the corporation is working. Now, the same concept कि जी discretionary responsibilities को ज़हन में रखकर, ethical responsibilities को ज़हन में रखकर, there are many countries who have created laws जिन्होंने CSR को एक integral part of a company policy बना दिया. For example, when you talk of United Kingdom or UK, the Companies Act of 2006 of United Kingdom formally includes CSR as a responsibility to be undertaken by the company. Because what you need to see is that when I
से इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि जनरली अंडरस्टूड है, पेपर में कहीं ना कहीं लिखी होती है. लीगल का भी जी ब्लैक एंड वाइट होता है, पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं करेंगे तो मसला पड़ेगा. विद रिस्पेक्ट टू एथिकल भी बहुत दफ़ा आपकी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आपको मिल जाती हैं. प्रॉब्लम डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है. डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर नॉट रिटन एनीवेयर. सो दैट मीन्स इफ द कंपनी डज इट वेल एंड गुड, इफ द कंपनी डजंट डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट what countries and are doing now is, with reference to understanding and realizing the importance of corporate social responsibility, they have created laws which makes CSR a responsibility that has to be, there's no choice about it, unko karna hai, zaruri hai, that has to be undertaken by companies. Now corporate governance, and I have already discussed कि जी corporate governance और CG और corporate social responsibility या CSR एक दूसरे के साथ कहाँ fit होते हैं. Corporate governance is that one large concept in which you include CSR, right? Now corporate governance is a powerful tool which can ensure corporate social responsibility permeates throughout the company. Now how can CG do that? Because corporate governance, as we've discussed earlier, is all about guidelines, codes, rules, regulations that monitor a company's operation. Now अगर corporate governance में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल देंगे, या अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एज अ टूल यूज़ करेंगे टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन दैट वुड मीन दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जितने रूल्स, कोड्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस आती हैं, दे आर ऑल गोइंग टू इंश्योर दैट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर गाइडेड बाय the principle of corporate social responsibility. So that is why the corporate governance becomes an extremely important tool, extremely powerful tool, which can ensure permeation of corporate social responsibility throughout the company. Similarly, you need to, using CG, you can also ensure कि जो आपका CSR है वो it operates in the internal, intermediate and outer circle. Remember when we were discussing accountability, last chapter में हमने बात की थी accountability की, उसमें responsibility, accountability, social contract and so on. उसमें हमने कहा था कि a company is accountable with reference to 3 different circles. एक उसका internal circle होता है जिसमें the company is only responsible for the economic objectives, or they're only responsible for ensuring and meeting its economic objective. फिर हमने कहा था इंटरमीडिएट सर्कल होता है जहाँ पर कंपनी सोसाइटी के लिए थोड़े मोटे काम करती है, पॉवर्टी के लिए, मे बी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रेफरेंस से. एंड देन देयर इज एन आउटर सर्कल जहाँ पर कंपनी वॉलंटरली एक खुद इनिशिएटिव लेकर, नॉट प्रेशराइज्ड बाय एनीबॉडी, नॉट प्रेशराइज्ड बाय द सोसाइटी, गवर्नमेंट खुद सोसाइटी के लिए काम करती है, कम्युनिटीज़ के लिए काम करती हैं, वर्कर्स के लिए काम करती हैं, वर्कर्स की फैमिली के लिए काम करती हैं. So we need to understand, or we need to ensure कि with reference to corporate governance, corporate social responsibility जो है वो तीनों सर्कल में, internal में भी, intermediate में भी और outer circle में भी operate करे. And then every company has to find and frame its own framework of CSR. Again, coming back to chapter number 1, remember when the president of the WBCSD said that every company needs to find their own magnetic north, meaning कि जी सबको एक, and why does every company need to find their own magnetic north? Simply because there's no predefined perfect definition of corporate social responsibility. And then again, the different definitions of corporate social responsibility that we have are being redefined very regularly or being changed very regularly. So what the companies need to do today is they need to find they need to find their own perfect balance, or they need to find their own perfect mix of what they should do which would result in compliance with corporate social responsibility, which would result in good corporate social behavior. So that is what we mean when we say that every company has to find and frame its own framework of corporate social responsibility. Now हमें ये समझ में आ गया कि जी where does CSR fits with reference to corporate governance. लेकिन you need to understand that everything that is happening in an organization is dependent on the leadership. Remember जब हम बात करते हैं management concepts की, और जब हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपने organization में implement करवानी है, then it has to have a top down approach. जब top management उसको adopt कर लेगी, for example any change that you may think of, change को
सब रेजिस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिवली चेंज इम्प्लीमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में, इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट इट, to implement it, and then to work towards जो चेंज आया है उसको ही वैसे ही यूज़ करें, बिकॉज व्हेन अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन सी द टॉप मैनेजमेंट वेयरिंग और embracing change, automatically everybody in the organization top down would also embrace change. For example, a very small example, for example, organizations आपको आपके ID cards देती हैं, right? And जनरली कोई पहनता नहीं है, क्यों पहने, क्या पहने, फिर मैनेजमेंट कहते हैं सब ने पहना है, कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू वेयर इट. Now everybody starts wearing them, and when you see your boss or your superior not wearing your ID card, you say यार इन्होंने नहीं पहना तो मुझे क्या ज़रूरत है, and then the importance all goes away. The next day when you come to your office, the probability is you might not be wearing the your corporation ID as well. However, अगर आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को अपनी IDs, कॉर्पोरेशन IDs पहने देखेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल अज्यूम यार द मैनेजमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट. अब तो वो पहन रहे हैं, इसका मतलब है हमें तो ज़रूर पहनना होगा. एंड ऑटोमेटिकली एवरीबडी in the organization would be committed towards wearing the corporation's ID or their employee's ID, right? So जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसको इंश्योर कराने के लिए कि थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन वो यूज़ हो, वो इम्प्लीमेंट हो और उस पर काम किया जाए, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपके जो लीडर है वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बिलीव करें, वो भी एथिक्स पर, मॉरल्स पर, वैल्यूज़ पर बिलीव करें. अब इज़ दैट ईजी? नो, इट्स नॉट रियली ईजी, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ता है आपका लीडरशिप का, या लीडरशिप क्राइसिस कंपनीज फेस करते हैं, बिकॉज द लीडरशिप इज़ नॉट कमिटेड towards implementation of corporate social responsibility, or they're not committed towards embracing or they're not committed towards doing their discretionary responsibilities properly, or their ethical responsibilities properly. So the obligation of a corporation can be discharged if leaders believe in them, चाहे वो कोई भी obligation हो, चाहे वो उसकी economic obligation हो, legal obligation हो, ethical obligation हो, या discretionary obligation हो. These obligations, these responsibilities can only be discharged, they can only be done effectively, they can only be made effective, they can only be achieved if your leaders, your top management believes in them. Now the human aspect ensures success or failure, as they are the process creators, process owners and process deliverers, meaning that individuals, lower management, middle management या top management, they are the ones जो के process को create करते हैं. कोई भी process हो, चाहे वो economic process हो, चाहे वो आपका functional process हो, चाहे वो rules को follow करना हो, चाहे उसमें आपके ethical processes शामिल हो, कोई भी process हो, they're the ones जो के humans are the ones जो के process को create करते हैं, they're the ones जो process को own करते हैं, and they're the ones जो के process को deliver करते हैं. Create करते हैं, अगर creation हो जाए, ownership ना हो तब मसला है, ओनरशिप हो जाए, डिलीवर सही तरीके से ना हो तब मसला है, क्रिएट ना हो, प्रोसेस भी हो, डिलीवर्स भी हो, तब मसला है. सो दैट मीन्स क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप भी इंपॉर्टेंट है और डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है. ये तीनों प्रोसेसेस ह्यूमंस करेंगे. अगर किसी भी प्रोसेस में आपका ह्यूमन एस्पेक्ट या आपके ह्यूमंस और इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड नहीं हैं, तो आपका प्रोसेस नहीं चलेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट when we say for a corporation to achieve something, the leaders have to believe in it. That is the reason, because they're the ones जो के उस process को create करते हैं, deliver करते हैं और उसकी ownership को या उसको own करते हैं. So it's extremely important for the humans, for the individuals, for the managers, for the leaders to believe in what they're doing, and then to apply on themselves first before they apply it on the entire organization. Organizations need a team that can identify with the mission statement. सब organizations को एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता. organization में एक बंदा mission statement पे या leader एक leader mission statement पे believe करेगा, that's not going to help. वो कितना काम कर लेगा, वो कितनी चीज़ें कर लेगा, वो कितने operations कर लेगा. But you need a group of people, you need a team to believe in the mission statement of the corporation so that the corporation can achieve its objectives. Now if the organization is defined by economic terms only, the management fails to realize the deeper values that the organization offers to employees in terms of security, personal growth and purpose in life. That basically means कि
हम कहते हैं कि जी you need a team of people, you need a group of people to believe in the mission statement. Now if your mission statement is just with reference to economic objectives, or your mission statement only is defined in terms of economic terms, then what you're failing to do as leaders is that as top management आपने अपनी orientation फर्क कर दी है, because mission statement is what the company exists for. Or the mission statement is just defined in economic terms, then that means that you have failed in terms of defining your organization with respect to other stakeholders. You have failed to realize the deeper values that the organization needs to have, so that it offers its employees security, purpose and personal growth. So economic objectives को achieve करना means कि आपका economic objective achieve इसलिए हो रहा है क्योंकि आप profitable हैं, लेकिन उस profitability के लिए आपको employee को motivated रखना बहुत ज़रूरी है, आपको employee को खुश रखना या committed रखना बहुत ज़रूरी है. employee को committed आप कैसे रखेंगे, employee को motivated आप कैसे रखेंगे, जब आप एम्प्लॉय के करियर के बारे में, करियर ग्रोथ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में, उसके पर्पस इन लाइफ के बारे में उससे बात करेंगे, उसको सोचेंगे, उसको मौके देंगे, उससे डिस्कस करेंगे. सो व्हेन द एम्प्लॉयज वांट टू फील कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे बारे में कंसर्न्ड है, ऑटोमेटिकली द एम्प्लॉय इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन द एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाउएवर प्रॉब्लम क्या होता है आजकल कि ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पेसिफिकली डिफाइनिंग देयर मिशन स्टेटमेंट्स इन इकोनॉमिक टर्म्स, और वो जो डीपर वैल्यूज हैं लाइक सिक्योरिटी, लाइक पर्सनल ग्रोथ, लाइक एम्प्लॉयज को क्या चाहिए है, एंड एथिक्स एंड मोरालिटी एंड जस्ट एंड राइट डूइंग राइट थिंग्स, वो सारी चीज़ें मिशन स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं होती. जब इनकॉर्पोरेट ही नहीं होती तो फिर आपका सिंगल फोकस सिंगल चीज़ है, आप उसी पर चलते रहते हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. Now organizations cannot have two set of morals. Organizations have to realize that making money is essential, but it is certainly not its purpose. That basically means कि organizations के को ये realize करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, yes, again, making money, we're not against making money. We're not saying you should not make money. Yes, it is very important. You should make money, but then that is not your only purpose. That is not the mission statement. आपका reason for existence सिर्फ money making नहीं है. There are deeper values, there are other values, there are other things, there are other responsibilities that the organization needs to fulfill in addition to its economic responsibility or in addition to its responsibility of making money. And you need to realize कि organization के दो sets of किसी भी organization का किसी भी set को जब individuals के फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स के जब टू सेट्स ऑफ मॉरल्स आते हैं कि जी आपके लिए कुछ और उनके लिए कुछ और, तो कन्फ्यूजन अराइज होती है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट हैव टू सेट्स ऑफ मॉरल्स, वन सेट ऑफ मॉरल्स फॉर द शेयर होल्डर्स एंड अनदर सेट ऑफ मॉरल्स फॉर द स्टेक होल्डर्स. दैट विल नॉट वर्क. या वन सेट ऑफ मॉरल्स फॉर द शेयर होल्डर्स एंड अनदर सेट ऑफ मॉरल्स फॉर द सोसाइटी. दैट विल नेवर वर्क. You need to have a single set of morals that's going to incorporate the shareholders, the society, the customers, the workers, everybody. So the set of morals is not going to be with reference to the shareholders, but the set of morals is going to be with reference to the stakeholders. Businesses do not operate outside of the society, and therefore it has a responsibility towards the society. और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सोसाइटी बिजनेसेस को ट्रस्ट करती है. अपनी नेचुरल कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे ऑयल, वो किसी कॉरपोरेशन की नहीं है, वो एक कंट्री की है और उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उसकी है. सो व्हेन an organization uses a natural resource, that means कि they're using resources of the society, and that means कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी से अलग नहीं है, वो सोसाइटी से बाहर नहीं है. वो रिसोर्सेज भी सोसाइटी की यूज़ कर रही है, वो इंडिविजुअल्स या जो एम्प्लॉयज़ उस कॉर्पोरेशन में काम करें वो भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं. सो बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन और द कॉर्पोरेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द सोसाइटी.
Hence, जब आप when you're part of a system, when you're part of a family, when you're part of a society, then automatically that means that you have to take care of that society. That means that you have to take care of that family. For example, you're part of a family. आप अपने अम्मी अबू बहन भाइयों के साथ रहते हैं. And because you're part of a family, you are supposed to protect your family, you are supposed to take care of your family, and you're supposed to be responsible towards your family. Now, इसी equation को आप corporation or society पर डाल दें, where society is the family and the corporation is part of the family. And when the corporation is part of the family, is part of the society, then it becomes the responsibility of the corporation to take care of the society. Then it becomes the responsibility of the corporation to do things for the betterment of the society and generally ensure कि society को कोई नुकसान ना पहुँचे. This can be fulfilled by the value orientation of the people within the business, because again जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि businesses are made up of एक technical aspect होता है और एक human aspect होता है, और उसमें भी जो technical aspect होता है उसके भी back end पर आपके humans involved होते हैं. So जब हम कहते हैं कि जो society को या जब हम कहते हैं कि corporation को society के लिए काम करना है, then the corporation is basically a structure. And the people are the one who are using the structure to do things. So बहुत ज़रूरी है कि जो लोग employees हैं, जो people who are working within the organization, they need to have the value orientation, and they need to think in terms other than the economic terms. So economic terms के अलावा उनको उनकी वैल्यू ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर वैल्यू ओरिएंटेशन नहीं होगी और सिर्फ इकोनॉमिक ओरिएंटेशन होगी तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचेंगे, और प्रॉफिट मेकिंग चाहे एथिकल वेज हो या अनएथिकल वेज हो, उनको दे विल नॉट केयर. लेकिन अगर आपकी वैल्यू ओरिएंटेशन होगी तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे. आप ये भी सोचेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से एनवायरनमेंट को क्या फ़र्क पड़ा है. आप ये भी सोचेंगे कि आप पॉवर्टी के लिए क्या कर रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, आप ओजोन लेयर के लिए क्या कर रहे हैं, आप जनरल एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं. आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे. सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वैल्यू ओरिएंटेशन रादर देन द इकोनॉमिक ओरिएंटेशन. नाउ ये तो हमें पता चल गया कि जी अगर हमको CSR को इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कराना है, इफ़ेक्टिवली अगर हमने ऑर्गेनाइजेशंस को ये मोटिवेट करना है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व हों और कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लीडरशिप को कन्विंस करें. बिकॉज़ अगर लीडरशिप आपकी कन्विंस हो जाएगी, बिकॉज़ अगर आपकी लीडरशिप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, देन ऑटोमेटिकली आपकी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करेगी. फॉर एग्जांपल अगर आपका लीडर जो है, आपका बॉस जो है वो ब्राइब नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, सही काम करता है, ऑटोमेटिकली द प्रोबेबिलिटी दैट एवरीबडी हु इज वर्किंग अंडर दैट पर्सन विल आल्सो बी फेयर, विल आल्सो बी एथिकल, विल आल्सो बी जस्ट एंड विल आल्सो नॉट टेक ब्राइब्स एंड डू द राइट थिंग. ऑन द अदर हैंड अगर आपका बॉस या सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप ही इज फुल ऑफ करप्शन, देन ऑटोमेटिकली द चांसेस आर और द प्रोबेबिलिटी इज कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, एंड दे आर नॉट डूइंग एथिकल प्रैक्टिसेस एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एथिकल एक्टिविटीज. नाउ हैविंग सेड दैट, यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल्स, और दिस इज अगेन रेफरेंस टू द लीडरशिप दैट वी हैव. क्वेश्चन इज, आर लीडर्स वैल्यू ओरिएंटेड? क्या जब हम कहते हैं कि लीडर्स की वैल्यू ओरिएंटेशन होनी चाहिए और इकोनॉमिक ओरिएंटेशन खाली नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन इज, आर लीडर्स वैल्यू ओरिएंटेड? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आपका क्या ख्याल है? क्या लीडर्स जो हैं वो वैल्यू एडिशन के बारे में सोचते हैं, वैल्यू ओरिएंटेशन के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे एक्शंस या हमारे डिसीजंस से सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ा, सोसाइटी में को नुकसान हुआ या सोसाइटी में बेहतरी आई, या वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचते हैं? दैट्स द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. Why are we asking these questions? हमारा लीडर से क्या ताल्लुक? Why should I care about an XYZ company's chief executive officer? We're caring about them because the society gives them a high pedestal, and this respect demands that leaders fulfill their responsibilities towards the society, because societies की वजह से ही कॉरपोरेशन बनी. कॉरपोरेशन सोसाइटी की ही वेल्थ को यूज़ करती है, उन्हीं की वेल्थ से प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है, और उन्हीं की वेल्थ उनसे लेकर
अपने लिए प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज जनरेट करती है. दैट मीन्स इट इज़ द सोसाइटी विच हैज़ गिवन दीज लीडर्स जो कि इन कॉरपोरेशंस को रन करते हैं और ऑपरेट करते हैं और मैनेज करते हैं. इट इज़ द सोसाइटी विच हैज़ गिवन देम दीज पेडेस्टल्स. अगर आज सोसाइटी या members of the society stop using a particular product and stop stop buying a particular product, what will happen to that corporation is that corporation is going to will not earn revenues. That corporation is not going to be profitable, and finally that corporation will sort of fade away and not be there anymore. फिर leader का क्या होगा? Will the leader survive? No, the leader will not survive because there's going to be no corporation. So that basically means that it is a society which has given these leaders a high pedestal. And with reference to this, act of the society, it is with respect to this particular action of society, they demand that leaders fulfill their responsibility towards the society. और leaders की society की तरफ responsibility simple enough है that you should have a value orientation. You should think of what value are you giving to your stakeholders. मैं society के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सब लोग जो कि मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे environment है, मेरी communities हैं, मेरे workers हैं, उन सब लोगों की betterment के लिए मैं क्या कर रहा हूँ. Now, increased specialization has resulted in more interdependencies. We know what specialization has. When specialization occurs, that means I can just do one specific task, but then I have to do so many other things. अब उन so many other things को मैं कैसे करूँगी? Because I'm just good at doing one thing. That means that so many other things has to be done by so many other people. And when so many other people are going to get involved, that means that I'm going to be dependent on those so many other people. Right? So that is how your increased specialization has resulted in increased interdependencies. Now, that means कि मेरा रिलेशनशिप हो गया उन सारे लोगों के साथ जो मुझे हेल्प कर रहे हैं और जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ. ना रूल्स कैन नॉट बी मेड फॉर एवरी रिलेशनशिप. अगर आप अम्मी अब्बू के साथ रिलेशनशिप है, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स है, जनरली रूल्स आपके रिलेशनशिप को गवर्न नहीं करते. रूल्स सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं कि जी दिस इज़ दी स्फीयर जिसके अंदर रहकर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं. अम्मी अब्बू से की फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप उनसे सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन ये है कि आप ये बातें नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते. सो रूल्स आर जस्ट गाइडलाइंस के भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाट रूल्स डू. एंड दे आर नॉट एंड ऑल ऑफ एवरी रिलेशनशिप. वो आपकी हर चीज़ को स्पेसिफिकली इस मौके पर ऐसे करो, इस सिचुएशन में ऐसा करो, इसके साथ ऐसा करना नहीं बता सकते. सो रूल्स आर जस्ट बेसिकली गाइडलाइंस. जब हम बात करते हैं ना, जब स्पेशली ये हम क्यों डिस्कस करें, बिकॉज स्पेशलाइजेशन की वजह से इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा हुई, इंटरडिपेंडेंसीज की वजह से रिलेशनशिप्स ज़्यादा बने और रिलेशनशिप्स को फिर इंसान को मैनेज करना भी आना चाहिए. नाउ यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस हैव विजन्स एंड वैल्यूज़ टू गाइड डिसीजन मेकर्स एंड रिलाई ऑन कोलैबोरेशंस. दैट मीन्स कि जिस तरह इंडिविजुअल्स की इंटरडिपेंडेंसीज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी आज इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज देव ऑल्सो रियलाइज इट एंड चांसेस आर कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वही काम करेगी जिसमें वो अच्छी है, और बाकी सब कामों के लिए द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशन, जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को फिर ये सोचना पड़ता है कि जब जो भी कोलैबोरेशंस हो रही हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, दैट हैज़ टू बी गाइडेड बाय विजन एंड वैल्यूज़. विजन वो है या मिशन वो है जिसकी बिना पर या विच इज़ द बेसिक रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और वैल्यूज़ वो चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बिटवीन राइट एंड रॉन्ग डिफरेंशिएट करते हैं, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है. सो विद रेफरेंस टू रिलेशनशिप, आपका विजन और आपकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिसीजन मेकर्स को गाइड भी करती हैं, और जब आप कोलैबोरेट कर रहे होते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो आपको बताती भी हैं या आपको गाइड भी करती हैं कि इफ दैट कोलैबोरेशन is going to work or not. Because let's say that
my company is collaborating with ABC, and my value and the value system of my company is very different from the value system of that ABC company. Will my collaboration work? No, it will never work. It can never succeed. So you should, as a corporation, collaborate and work with only those companies जो कि आपकी values और आपकी vision के साथ aligned है. Now this can work if leaders are committed to work and work becomes their motivation and not pay or perks. So जब आप guidance की बात करते हैं, collaboration की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि लीड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वैल्यू सिस्टम के साथ चलना चाहिए, वहाँ पर फिर लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. द लीडर शुड बी कमिटेड टूवर्ड्स द वर्क. The leader should be motivated to work, and the work should be the only motivation of the leader. And the salary or the perks or the benefits or the incentives should not be the reason of motivation for the worker. Because agar benefits or wages or salaries or compensation or incentive आपका motivational factor है leader के लिए, then that means that the leader is generally is going to believe in the agency theory or the transaction theory. On the other hand, if the leader is the sort who is motivated by the work itself, then most probably the leader is going to be motivated by the stewardship theory and will be true to the organization and will be honest to the organization. Usually, rules result in complacency, but code signifies minimum necessary. That basically means कि जब हम rules, regulations, ये rule नहीं ये कहा, regulation नहीं ये कहा, तो complacency आ जाती. Complacency is basically a laid back attitude, because what you're doing is you're hiding behind rules, and that's what leaders do as well. कि जी rule कहता है इसलिए हम नहीं कर सकते because it's against the rule. ठीक है, it's against the rule, but then you should find a way out of it. Yeah, you should change the rule, but then finding a way out or changing the rule would basically means that you would have to work extra. अब extra काम करोगे फिर आप सोचते कि अच्छा overtime मिलेगा, benefit मिलेगा, perks मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करता. So a lot of time for a lot of people, and just introspectively अगर आप भी अपने आप को देखें, rules complacency डालते हैं, rules से complacency आती है. On the other hand, होना क्या चाहिए कि जो rules, code, guidelines हैं, they should signify the minimum necessary. They should signify कि जी इतना तो achieve करना ही करना है, इसके ऊपर आप जितना अचीव करें that is your problem, that is your issue. So कोड या रूल या कोड ये कहता है कि जी this is the minimum, and on top of it whatever you want to do you can do. So when I say that the rule is that you need to spend 40 hours a week in your organization, that does not mean कि आप सिर्फ 40 घंटे ही काम करें और 41st hour तो आप ऐसे भागे घर जैसे there's somebody behind you. That is what complacency is. But अगर हम इसको एक positive approach से देखें, then what that rule basically says is that the minimum time that the employee needs to spend in the organization is 40 hours a week. उसके ऊपर एम्प्लॉय जितना भी स्पेंड करना चाहे वो एम्प्लॉय की मर्जी है. सो वो 45 आवर्स स्पेंड करे, 50 आवर्स स्पेंड करे, 60 आवर्स स्पेंड करे, 70 आवर्स स्पेंड करे, वो एम्प्लॉय की मर्जी है. सो बेसिकली व्हाट वी ट्राइंग टू से है, इसके लीडर्स हो गए, सब लोग हो गए, उनको ये देखना चाहिए कि जो रूल जो है ना वो मिनिमम नेसेसरी होता है. रूल जो है वो उसको कंप्लेसेंट नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल को. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन एंड कॉमन गुड शुड बी द गाइडिंग factors while reviewing work and its result. And this is very important for leaders कि जब आप leaders जो हैं अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और एनालाइज करते हैं, इट शुड नॉट ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. कितना पैसा मनी टर्म में नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं होनी चाहिए. हाउ मच डिड वी अर्न, हाउ मच डिड वी लूज, व्हाट वर आवर एक्सपेंसेस, व्हाट वर आवर रेवेन्यूज. बट व्हाट द लीडर्स शुड डू इज दे शुड लुक एट इट क्वालिटेटिवली. दे शुड लुक एट द सोशल bottom line as well, and they should look at instead of the financial bottom line, they should also look at the social and the environmental bottom line as well, and see कि हमने क्या किया, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया, हमने स्टेक होल्डर्स के लिए क्या किया, हमने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया. Did our action resulted in profitability, but did it also result in degradation of environment? And if that is true, then no, what we did was not right. So it is important कि जी while reviewing work, while reviewing performance, while reviewing results, one should look at it with the concept of compassion and common good. Now this particular slide is of extreme importance because it's going to give you certain figures and it's going to tell you कि जब हम leaders की बात करते हैं, हमने ये भी decide कर लिया कि leaders जो हैं वो extremely important है for an organization, और हमने ये भी decide कर लिया कि जो आपके leaders हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के लिए, वैल्यू सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ओरिएंटेशन होगी या ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक ओरिएंटेशन होगी, ये कौन डिसाइड करता है? आपका लीडर. नाउ विद रेफरेंस टू लीडर, these are very important statistics that we should study. According to Business Week annual executive compensation survey, between 1990 and 2003, I know it's a little bit old, but it will still apply, the CE pay rose 313% as compared to with profits that rose by 128%. That means that the profits rose by 128% and the chief executive compensation or the chief executive pay rose by 313%. That is more than the double of what the profits were, okay? And the average worker pay, this is the most interesting part, and the average worker pay increased only by 49%. So that means कि worker जो कि actual काम कर रहा है उसकी pay 49% raise हुई, profits आपके 128% raise हुए, और the chief executive की pay है वो 313% raise हुई. That's huge differences. Gaps हैं 49%, 128%, 313%. आप इसको कैसे justify करेंगे? Leaders are taking so much of money from these corporations, and then अगर वो सही decision making नहीं करते, अगर वो अपनी discretionary responsibilities, ethical responsibilities को पूरा नहीं करते, then yes, we do have a problem because they are being paid huge sum of money. And then again, where is their pay coming from? From basically the money that you and I pay, because when we're buying their products, that's the profit that the company makes, and the company gives these chief executives their salary from the money that they earn from you and me. So I expect जब कोई इतनी तनख्वाह लेगा, so I expect कि वो सही से काम करेगा, वो सही decision making करेगा, वो bounded rationality model को decision making के लिए use नहीं करेगा, वो ethical, discretionary, legal, economic सारी responsibilities पूरी करेगा. Now professionals have to unite to create a leadership cadre that can fight such unethical conduct and that is sustained in the name of expertise. Now have you asked itni percent raise kyun hai? Just ask people. If you know somebody who's a chief executive, ask that person how much pay do they get. 20 lakh, 15 lakh, 10 lakh. Is that justified? Okay, yes, but that's justified when your worker also gets the same amount of pay or a similar amount of pay as compared to the work that he or she is performing. So what is the need of the day is that we need to have professionals, leaders coming together, sticking together, making associations, making groups that can fight such unethical conduct that is sustained in the pretext of expertise. Chief executives को salary इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है? Just because people feel that they have the knowledge, they have the expertise. Yes, I agree that they should get that much of salaries. Not that I'm against chief executives getting that much of salaries. What I'm saying is कि फिर disparity नहीं होनी चाहिए. जो chief executive की salary अगर 313% बढ़ी with respect to his expertise, his knowledge, his experience, then worker की भी salary उतनी ही % बढ़नी चाहिए थी with respect to his expertise, his knowledge and his experience. So that's the crux of this particular discussion. Leaders have to take a proactive stand and exert authority to shape policies conducive to human good. We've discussed this before as well. It is important, it is imperative for leaders to be proactive, not wait for things to happen, but do things themselves. Instead of कि एक बंदा आकर उनको कहे, उनको खुद से initiative लेना चाहिए और खुद से काम करना चाहिए. And they should exert authority to shape policies, make procedures, make regulations that is conducive to human good. That would result in the betterment of the society in general and people in particular. And leaders should develop unique qualities in every stakeholder, as everybody knows something that the others don't, and then use these skills for making your organization or your corporation successful. So it becomes important for the leader to do 2-3 things. One, the leader has to adopt change or adopt corporate social responsibility practices so that CSR practices are adopted throughout the organization. 2, the leader should not indulge in unethical practices. And 3, the leader has to develop skills, unique skills in every stakeholder, because jitne bhi stakeholders are suppliers, employees, customers, creditors,
ट्रेड यूनियंस, whoever is a stakeholder, सबके पास कोई ना कोई यूनिक स्किल है जो कि शायद दूसरी पार्टी या दूसरे इंडिविजुअल के पास नहीं है. सो अच्छा लीडर वो होगा जो इन सारे स्टेक होल्डर्स की स्किल्स को डेवलप करे, इंडिविजुअल स्किल्स को विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स को डेवलप करे. एंड देन एक अच्छा लीडर वो होगा जो इन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सक्सेसफुल करे, ज़्यादा अच्छे से उसके ऑपरेशंस को मैनेज करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा effective बनाए. So that is the role of a leadership with respect to corporate social responsibility and with respect to implementing the initiatives under the corporate social responsibility. The next thing is the social impact. The law and order situation is also dependent on economics of a country. This is self-explanatory. I'm sure you know what I mean. जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से. फॉर एग्जांपल बैड इकोनॉमिक कंडीशंस, लो जीडीपी, low purchasing power, people will not have food, people will not have a place to live, people will not have clothes to cover themselves. That's going to result in people getting frustrated, people getting angry, people then will come on the streets and start burning vehicles, and they will start destroying property, and they will start destroying public property. So that is how, and again आपकी law and order situation create हो जाएगी. पाकिस्तान में तो बहुत multiple times आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये चीज़ें होती हैं. So the law and order situation is very dependent or is very closely linked to the economics of a country. And then again जो मैंने भी आपको example दी, जब आपकी society frustrated होती है, public frustrated होती है, तो वो गुस्सा कहाँ निकालती है? big businesses पे. क्योंकि जाएंगे कोई बड़ी कॉरपोरेशन होगी, उसका ऑफिस को तोड़ देंगे, उसकी चीज़ों को जला देंगे, उसके शीशे ख़राब कर देंगे, उसका फर्नीचर बाहर फेंक देंगे और चीज़ें चोरी करके ले जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे सेंगे अच्छा ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास ढेर सारे पैसे हैं, ढेर सारी रिसोर्सेज हैं और इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमसे शेयर भी नहीं करते, चलो भाई इनके साथ हम इनकी सब चीज़ें ख़त्म कर देते, ना इनके पास रहेगी, हमारे पास तो वैसे भी नहीं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट एंगर जनरली, अगर बैड इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी तो जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगी और जो एंगर जो सोसाइटी एंगर फील कर रही होगी वो जनरली बिग बिजनेसेस पर ही निकाला जाता है. नाउ इफ बिजनेस नीड्स कस्टमर with buying power, then it has to ensure that common man position improves. Now there's a circle that we are trying to make here. Economic conditions kharab hui, bad law and order situation hui, law and order situation hui, society angry hui, to usne business pe gussa nikala. This is one circle. The other circle is that the business realizes that it is important for the business to keep the individual or the common man of the society happy. That means that the business indulges in activities which helps the society, which helps in the betterment of the society. जब society बेहतर होगी, then automatically आपकी, for example, business ने educational institute, free educational institute खोले, education ज़्यादा होगी तो लोगों को नौकरियाँ ज़्यादा मिलेंगी, नौकरियाँ ज़्यादा मिलेंगी तो purchasing power ज़्यादा बढ़ेगी, purchasing power ज़्यादा बढ़ेगी तो people will be able to buy more products, ज़्यादा products खरीदेंगे तो corporations को फ़ायदा होगा. So instead of the cycle one that I discussed जिसमें सब negative था कि जी इकोनॉमिक ख़राब, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब, एंगर और बिजनेस ख़राब, इट इज़ बेटर टू गो फॉर साइकिल 2 जहाँ पर बिजनेसेस कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए करें, सोसाइटी बेहतर हो, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, बाइंग पावर ज़्यादा हो और बिजनेस को पॉजिटिव इफेक्ट हो. सो अगर आप इस साइकिल को देखें तो मतलब ये समझ में आता है कि बिजनेसेस के लिए द कॉमन मैन की जो इकोनॉमिक पोजीशन है या जो कॉमन मैन की इकोनॉमिक्स हैं वो किसी भी बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर कॉमन मैन की इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की इकोनॉमिक्स भी अच्छी नहीं हो सकती और बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अनलेस द बिजनेस कम्युनिटी contributes to the basic development needs, its own survival will be threatened. I just told you, I just gave an example for that. So if the business is not contributing to the basic development needs of the people, then
then automatically the business is never going to grow, the business is never going to be successful, the business is never going to be profitable. So the easiest solution अगर आप देखें तो it is better, for example अगर हम example के साथ easy solution देखें, so it's better कि organizations जो हैं वो education के लिए काम करें, corporations जो हैं वो education for the flow of education to every level of a society के लिए काम करें, because education ज़्यादा होंगी, पढ़ाई ज़्यादा होगी, maturity levels बेहतर होंगे, jobs ज़्यादा मिलेंगी, buying power ज़्यादा होगी, and so on and so forth. So, unless the business community contributes to the basic development needs of people, its own survival will be threatened. And managers behave as होता क्या है, ये तो सब हम बातें करते हैं, कॉन्सेप्ट कर, ये तो हम डिस्कशन करते हैं, हमें बातें समझ भी आती हैं. रियलिटी चेकअप लेना बहुत ज़रूरी. हम पेपर पे सारी बातें कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए, सोसाइटी की बेहतरी होगी तो ऑर्गेनाइजेशंस की बेहतरी होगी. बट रियलिटी में क्या होता है, दैट मैनेजर्स बिहेव एज इफ दे आर अलोन एंड दैट दे डोंट हैव चॉइसेस. मैनेजर से पूछें तो आप कॉर्पोरेशंस की बात करें तो उनको लगेगा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एज इफ दे आर द ओनली पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ. एंड देन द बेस्ट आंसर दैट दे गिव टू पीपल इज, जी हमारे पास चॉइस नहीं थी. आपने ऐसे क्यों किया, दिस इज नॉट राइट, तो एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा. जी हमारे पास चॉइस नहीं थी इसलिए हमने ये किया. इट इज़ दिस लैक ऑफ चॉइसेस विच इज़ द किलर ऑफ ह्यूमैनिटी. जब कोई बंदा ये कहता है कि जी इसलिए मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी. सो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन और द कॉर्पोरेशन बेसिकली डूइंग इज कि they're using it as an excuse to kill the humanity. They're using that lack of choice as excuse to get rid of all the good which is there in the humanity. So they're just using it as an excuse. Now इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जी मेरे पास चॉइस नहीं थी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जी हमको तो जो करना है वो करना है, या इस कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉर्पोरेशंस ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स, ये क्यों सोचती हैं अपने बारे में? बिकॉज द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर थिंग इज इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसके अगर आप बैक एंड पर जाएं तो इशू क्या है, इसकी बेसिस क्या है? द कॉन्सेप्ट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स के दिमाग में डालते हैं कि जी इट इज़ वेरी competitive market, जी survival of the fittest. Now when it is the survival of the fittest, then that means only the fittest is going to survive. Question: who judges कि कौन fittest है, कैसे fittest है, किस क्राइटेरिया के थ्रू fittest है? क्या fittest ये है कि आप profitable हो? वो शायद आपके ख्याल से वो फिटेस्ट हो, मेरे ख्याल से फिटेस्ट ये है जो कि प्रॉफिटेबल भी हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो. सो क्वेश्चन इज के अब मेरे आपके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रही हूँ. सो द प्रॉब्लम इज के इट इज़ कॉन्सेप्ट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि इस किस्म के मसले क्रिएट करते हैं. इट इज़ concepts like cutthroat competition that has resulted in accumulation of wealth without thinking of ethics. It's concepts like जी बड़ी competitive environment है, cutthroat competition है कि corporations have started thinking कि भाई जैसे भी हो, by hook or by crook, by ethical means or unethical means, हमको wealth accumulate करनी है, हमको profitable होना है, हमको sales increase करनी है, हमको revenues increase करने हैं, हमको expenses increase करने हैं. And that results in social havoc. For example, कि जी हम कहते हैं कि जी how can one way of increasing profits or increasing revenues is by reducing expenses. One way of reducing expenses, because it's a very tough market, बहुत competition है, cutthroat competition है, तो हम expenses कैसे reduce कर सकते हैं? By using B grade or raw material which is not of good quality. जब रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंसेस कम आएंगे. जब एक्सपेंसेस कम आएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएंगे. बट उसका इफेक्ट क्या होगा नेशन पर, उसका इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी पर? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? व्हेन यू हियर एवरी डे कि जी फलानी कंपनी, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल डाइड इन लाहौर बिकॉज दे टुक अ कफ सिरप पीकर लोग क्यों मर गए? 2-3 वजह, या तो उनको एलर्जी थी किसी चीज़ से, या उस कप सिरप में का जो कंट्रोल प्रोसेस था जिसने देखा कि जी क्या सही इंग्रेडिएंट्स सही अमाउंट्स में डले वो सही नहीं था. So what corporations are basically doing is keeping in line with these concepts of cutthroat competition, survival of the fittest, what they're doing is
they are not looking after the humanity. They are doing whatever that they can do to accumulate wealth without thinking of the consequences, without thinking of ethics, and that results in societal degradation, that results in bad things for the society, that results in social havoc. Now the consensus is, or the consensus management, एक तो होता है कि कंसेंसस हमें करना है, और हमने ये कंसेंसस किया कि इन सब चीज़ों को देखते हुए consensus management is a need for today. Consensus management basically is that all parties, all stakeholders should agree on one decision. Now you need to keep in mind one thing, जब हम consensus की बात करते हैं तो जब सिर्फ शेयर होल्डर्स में कंसेंसस होगा तो सिर्फ एक ही कंसेंसस होगा, प्रॉफिट मेकिंग, मोर मनी. लेकिन जब स्टेक होल्डर्स में कंसेंसस होगा तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हु वुड हैव डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स, हु वुड वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द कॉर्पोरेशन. नाउ जब आप somehow or the other, जब आप स्टेक होल्डर्स के बीच में कंसेंसस डेवलप कर लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी द आइडियल परफेक्ट बैलेंस, बिकॉज ना वो शेयर होल्डर्स की तरफ ज़्यादा होगा, ना वो कस्टमर्स की तरफ ज़्यादा होगा, ना वो एम्प्लॉयज़ की तरफ ज़्यादा होगा, बिकॉज एवरी मेंबर और एवरी स्टेक होल्डर वुड हैव गिवन एंड taken something, so that एक मिडिल पॉइंट रीच करें जहाँ पर सब लोग खुश हों, एंड इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन अ विन-विन सिचुएशन. सो यू नीड टू क्रिएट अ फैमिली विद इन द कॉर्पोरेशन. एंड जब भी हम फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली में अगेन जब आप कंसेंसस फैमिली में लाते हैं तो आप सबके सुनते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, एंड सो दैट एवरीबडी एग्रीज ऑन वन पॉइंट. और जब फैमिली जब एग्री हो जाती है, कर लेती है किसी बात पर, देन वी ऑल स्टिक टुगेदर. एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक वैल्यू, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड सेल्फलेसनेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फैमिली में आती हैं. Hence, it is important कि आपकी कॉर्पोरेशन में कंसेंसस मैनेजमेंट हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन starts thinking like a family, because once the organization starts thinking like a family and consider all stakeholders as their family members, then automatically we're going to go back to the very basics of ethics, and we're going to go back to the principles of ethics, and we're going to go back to concepts like integrity, honesty, selflessness, trust. इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे. So, corporate social performance encompasses an organization's commitment to behave in an economically and environmentally sustainable manner while honoring the interest of the direct stakeholders and benefiting the greater community at large. So basically जब आप corporate social performance की बात करते हैं, remember CSP हमने पिछले लेक्चर में, पिछले 1-2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था corporate social performance, corporate social responsibility and corporate social responsiveness. So corporate social performance is basically जहाँ पर आप ऐसे काम करते हो जो कि इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल. अगेन सेम थिंग दैट आई से ओवर एंड ओवर अगेन, दैट हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रॉफिट मेकिंग नहीं करेंगे. जब हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, दैट्स व्हाट प्रॉफिट मेकिंग इज. बट at the same time, we're also considering the environmental sustainability as well. You need to have your environment in a good condition so that you can be economically sustainable as well, while honoring the interest of the direct stakeholders and benefiting the greater community at large. The success of this performance depends upon what people think about the business and how people behave in an organization, because what you and I, what customers think about the business is going to result in the customers making up their mind if they want to buy a product or if they don't want to buy a product. For example, if I get to know कि जी एक company है which is polluting the rivers, तो शायद मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट कभी भी ना खरीदूं. सो दैट इज़ व्हाट when I say कि जो performance that is dependent upon what people think of the company. If the people think positively about the company, then the people are going to buy from that company or buy products of that company. And on the other hand, if the people think negatively about the company, then automatically people are not going to buy products of that company. And the second thing that depends or that impacts the performance of a company is how people behave in an organization. Internal people, internal employees, internal individuals which are internal to the organization, how do they behave? Because अगर वो trustworthy हैं, honest हैं, just हैं, selfless हैं, then automatically उनके काम में ये सब चीज़ें शो होंगी. जब काम अच्छा होगा तो products अच्छे होंगे, ethical decisions making, operations clean होंगे, financial reporting अच्छी होगी, disclosures proper होंगे और सब चीज़ें organization के लिए अच्छी होंगी. Automatically organization की जो performance है वो affect होगी.
Now, another aspect that I would, with reference to the slide, another aspect that I would want you to think is कि economic sustainability and environmental sustainability बहुत closely linked है एक दूसरे के साथ. कैसे, क्यों? Because if the company is only thinking of economic sustainability and not thinking of environmental stability, there will come a time when the environment is not going to be there. For example, you're cutting trees because you're making more paper. There's going to come a time where there's going to be no trees. End result, conclusion, जब trees ही नहीं होंगे तो आप paper कैसे बनाएंगे? So, in the economic interest of the corporation, या corporation का economic interest भी इसी में है कि environment sustainable रहे, environment रहे इतनी अच्छी कि वो आपको raw material provide करती जाए ताकि आप products and services बनाते जाएं. The next thing that we're going to talk about is where do various organizations fit with respect to corporate social responsibility initiatives and the organizational structure. The value of corporate social responsibility is actually a transcendent value. And transcendent value is basically inspirational value, because corporate social responsibility सिर्फ inspiration ही आती है. Corporate social responsibility की कोई monetary value नहीं है, उसकी सारी inspirational value है. Now, when such inspirational ideology is combined with formal structure, the result is the following 4 types of organizations. So this is what this matrix is. You have corporate social responsibility or the inspirational ideology or the transcendent value here. You would have corporations who would not believe in corporate social responsibility to organizations who would very strongly believe in corporate social responsibility. And corporate social responsibility is going to be here, and in addition to this you have formal structures here. कि या you would have ऐसा कि जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर होगा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेशन में, या यू वुड हैव वेरी formal structures in the organization. For example, an example of very formal structure, जिस अगर आप आर्मी की बात करें वहाँ पर बहुत formal structures होते हैं, और अगर आपको कोई ऐसी situation नहीं मिलेगी, कोई ऐसी organization नहीं मिलेगी जहाँ पर structure नहीं होता. Structure हर organization में होता है, हाँ weak structure होता है, खराब structure होता है, that's besides the point, लेकिन structure हर organization में होगा. Now, organizations who are very low on CSR and have no structures are anarchy organizations. And organizations who are very high on corporate social responsibility but their structures or their formal structures are weak, they are your social organization. On the other hand, organizations who have very formal structures but do not believe in inspirational ideology and do not believe in transcendent values are robots. And organizations who are high on CSR, high on transcendent values and high on structures are basically your incorporated companies. Now that is what the matrix of transcendent and formal organization is, which was given by this person in the year 1997. Now what does this all mean? And for your information, this is our last slide as well, so you should be smiling by now. Now, anarchy is basically a hypothetical company or a hypothetical state. Why is it a hypothetical state? Because I said कि जी चाहे जैसी भी organization हो, structure organization में होगा, लेकिन anarchy में आप ये believe करें कि there is no formal structure in the organization. Have you ever met, seen, or discussed or maybe studied an organization or a corporation जहाँ पर structure ना हो, formal structure ना हो? No, you haven't. So that is why we say कि anarchy की जो type of organizations हैं, they are hypothetical organizations, because जब structure ही नहीं होगा और आप की कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी और आप CSR पर बिलीव ही नहीं करते होंगे और आप एथिक्स पर बिलीव ही नहीं करते होंगे, रिजल्ट क्या होगा? टर्मोइल, chaos, conflict and finally extinction, because there's going to be no organization left. The second type is a robotic organization. That represents the mechanistic view. Organizations act as machines and the human acts in a predefined manner. So that is where your robots are, जहाँ पर इतना ज़्यादा formalized structure है, इतने rules, इतनी regulations, इतना A, B, C, D, E, F करना है कि
you literally become robots. आप mechanistic हो जाते. That's why they are called robotic, क्योंकि यहाँ पर emotions involved नहीं है, human aspect नहीं है. और जब मैं बिल्कुल शुरू में बात की थी कि जो organizations में primarily human aspect होता है, वो यहाँ ख़त्म हो गया, because then humans are not using their brains, they're not using their emotions, they're working in a predefined pattern. 8 o'clock, come to the office. 8:05, sign in. 8:10, sit on your seat. 8:12, drink your coffee. 8:15, open your computer. 8:20, read your newspaper. 8:25, open file. 8:30, close file. Now that is what a robotic organization is, जो कि formal structure पर बहुत high है, लेकिन इंस्पिरेशनल वैल्यूज़ पर ज़ीरो है, बिकॉज उसमें कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है. बिकॉज ये चीज़ तभी आएगी जब आपका ह्यूमन एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. So that is what your robotic organization is. Next is your social organization. Humans are the only structures that exist. Interconnection between common values and direction, difficult to find state other than it is difficult to find other than in small organizations. So this is where social is, where it's all about the humans. Now again, जिस तरह हमने कहा कि robot was not good because it was all about the structure and there was nothing human in it. Similarly, this is all about humans and nothing, there's no structure in it. Is it good? No, it's not, because for effective, for efficiency, for productivity, for profitability, for managing, or for even corporate social responsibility, जो हमने पहले बात की कि corporate social responsibility को आपने corporate governance में डालना है ताकि आप अपनी strategy में, अपनी planning में, अपनी direction में, सब में CSR को incorporate कर सकें. It becomes part of your strategic plan. Now if there's going to be no formal structure, there's going to be no strategic plan. Only people. They're going to come together, sit together, gossip together, go home. Nothing can be achieved. No CSR, no transcendent values, no सिर्फ इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है. अच्छा, इंस्पिरेशन तो हो गई, लेकिन उस इंस्पिरेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा. एंड दैट इज़ वाई they say that such type of systems or such type of organizations are only small organizations. आपको ये कहीं और नहीं मिलती. And finally you have your incorporated ideal state where values and structures are strong. Integrated structures are because of collective consciousness of members. That is where this is. High on inspirational ideology, high on structures. Strong structures, strong CSR, and this becomes your best ideal organizations. Why is it ideal? Because of the efforts of the people who are working, because the efforts of the stakeholders and the employees, because of the consciousness of all the members of the organization, be it internal to the organization and be it external to the organization. And this is what incorporated is. And with this, we're going to finish our lecture today, and we're going to do a quick recap. Yes, very quickly. We just talked about what we started with. Where does CSR fit into corporate governance? Then we talked about the leadership crisis. Then we said कि जी आप values को कैसे incorporate करते हैं organization में. And then we also talked about कि जी different kind of responsibilities क्या होती हैं organization की. And we finally talked about the matrix कि जी आप social responsibility और structure को कैसे incorporate करते हैं और आपकी ideal type of corporation जो है वो incorporated है, जो कि high on structure and high on inspirational ideology होती है. So with this we finally ended our lecture number 7 and chapter number 2. I know I took 4 lectures to complete chapter 2, but I would want you to understand each and every concept very quickly. So till next time, till lecture number 8 and chapter number 3. And before I go, please, 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 you need to study your chapter number 3 before you come and before you read or before you study or before you see my lectures. So till next time, Allah Hafiz.